we will discuss about the can say organic chemistry. The organic chemistry, we can say chapter number 11. I can say this is chapter number 3. So of 10 class. So now let's start. So we can say that organic chemistry. So we can say that early scientists defined organic chemistry, organic you can say organic compounds is compounds that were derived from living things. So early scientists defined organic compounds as compounds. So these are derived from living things, plants, animals. A Swedish chemist, Berzelius, in 1815, put forward a theory called vital force theory. According to this theory, vital forces are necessary for the synthesis of organic compounds. So we can say that ये बता रहे कि जो पहले जो साइंटिस्ट थे, जो अर्ली साइंटिस्ट थे, उनके मुताबिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या चीज़ है, यानी ये वो बता रहे थे कि वो उनको लिविंग थिंग्स से, यानी जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स से, उनसे हासिल किया जाता था. तो फिर स्वीडिश केमिस्ट बर्जिलियस 1815 में उन्होंने एक थ्योरी पेश की और उस थ्योरी को कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी. इन 1815 बाय Berzelius. According to this theory, vital forces are necessary for the synthesis of organic compounds. तो बर्जीलियस वो कह रहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी तैयारी में वाइटल फोर्सेस का होना ज़रूरी है. यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तैयारी में वाइटल फोर्सेस का होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से उसकी थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी कहा जाता है. Now, organic compounds are very important. They are extensively used in our daily life for the food that we eat, the clothes that we wear, the natural gas that we burn for cooking, and in industry, also are organic compounds. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें जो डेली लाइफ में हम यानी फूड को हम खाते हैं, खुराक को हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, और इसके अलावा जो नेचुरल गैस है जिसको हम घरों में जलाते हैं कुकिंग के लिए, और ये सारे जो है ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है. Now, in this unit, you will study the organic compounds, their sources, their structure, condensed and molecular formula, the characteristics of organic compounds, and the functional groups of the organic compounds. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. तो इस चैप्टर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे. तो यहाँ पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में इस यूनिट में, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. उसकी जो सोर्सेज है और स्ट्रक्चर जो फॉर
कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है एंड फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स you can say exist in large numbers, and they are studied in a separate branch of chemistry called organic chemistry. So you can say organic chemistry is the study of carbon containing compounds except oxides of carbon, carbon monoxide, carbon dioxide, carbonates, bicarbonates, and some metal carbides. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम बता रहे कि ये लार्ज नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या चीज़ है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, यानी वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन होता है उसको हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन मौजूद होता है, सिवाय उन कंपाउंड्स के जिसमें ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेट्स है एंड बाइकार्बोनेट्स, यानी जिनमें कार्बन ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स यानी ये मौजूद हो, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा जो कंपाउंड्स है जिसमें कार्बन होता है उसमें हम उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। या दूसरे अल्फाज में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इट इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। सो स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, ये क्या है? इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो there are several millions organic compounds known today, and thousands of organic compounds are prepared every year. A detailed study of carbon showed that carbon is an element, but still its compounds are in millions. Therefore, organic compounds are now defined as hydrocarbons and their derivatives. Organic compounds that contain only hydrogen and carbons are called hydrocarbons. यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स may contain other elements such as oxygen, chlorine, sulfur, and nitrogen. Organic compounds may be classified into two groups depending on their origin. तो इसको हम दो ग्रुप्स में तकसीम करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो सो यू कैन से द फर्स्ट वन इज नेचुरली अकरिंग, जैसे कोल या फूड है। द सेकेंड वन इज सिंथेटिक एंड मैन मेड, जैसे प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स एंड मेडिसिन। सो यू कैन से दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स. The first one is naturally occurring, containing coal, food, and the second one is synthetic, you can say plastic, detergents, and medicines. These are second types of organic compounds. Each of these organic compounds can be represented by molecular formula, structure formula, we can say condensed formula, and dot and cross formula. So first one is the, you can say the molecular formula.
The formula which represents the actual number of atoms in one molecule of organic compound is called the molecular formula. यानी वो फार्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूल के अंदर, उसको कहेंगे ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है. फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ प्रोपेन इज कैन से C3H8 and butane is C4H10 etc. So these are compound containing carbon and hydrogens, so you can say these are organic compounds. So in this case propane consists of 3 carbon atoms and 8 hydrogen atoms. Similarly butane consists of 4 carbon atoms and 10 hydrogen atoms. The structure formula can say of a compound is the arrangement of different atoms of various elements around the carbon atom present in a molecule of a compound. तो स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, यानी जो स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो उसमें हम कहेंगे कि जो नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स होते हैं वो उसकी जो अरेंजमेंट है, यानी कार्बन एटम्स के इर्द गिर्द जो उनकी अरेंजमेंट होती है उसको हम कहेंगे कि ये उसका स्ट्रक्चर फार्मूला होता है. यानी कार्बन एटम के इर्द गिर्द जो डिफरेंट एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल के अंदर, यानी किसी कंपाउंड में, तो उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चर फार्मूला. और यू कैन से the structure formula shows the number types of atom present in the molecule and also shown the bonding of element of atoms. In structure formula all the bonds are shown by their exact number. Single bonds are represented by single line, double bonds are represented by double lines, and triple bonds are represented by 3 lines between the bonded atoms. So we can say स्ट्रक्चर फार्मूला में हम सिंगल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वगैरह को रिप्रेजेंट करेंगे. मिसाल के तौर पर ये हमारे पास प्रोपेन है, ब्यूटेन है, तो ये जो है ना इसका है प्रोपेन, इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3 प्रोपेन. सो ये सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है. सो यू कैन से there are 3 carbon atom and number of hydrogens are 1 2 3 4 5 6 7 8. So we can say C3 3 carbons and number of hydrogens are 8 H8. Similarly, in case of butane, you can say that the carbons are 1 2 3 4, so C4. Hydrogens are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, so H10. So C4 H10, CC and butane. Next one is the, you can say condensed formula. So the condensed formula of a molecule is the formula when the groups of atoms are shown in order as they appear in the structure formula with no bonds or dashes.
कंडेंस फार्मूला में हम यानी कि जो ऐसे लिखेंगे कि जिसमें जो है ना ये डैशेस या बॉन्ड वगैरह का जाहिर न हो। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास इसमें कोई हमें पता नहीं चल रहा कि बॉन्ड कौन सा है, सिंगल है या डबल है। तो बहर अब यहाँ पर तो हमें जो है ना ये बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं कि ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड ये सारे ये सिंगल कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में, कार्बन और कार्बन के दरमियान में। लेकिन जो कंडेंस फार्मूला होता है उसमें हम ये इस तरह लिखते हैं, लेकिन उसमें बॉन्ड का पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन सा बॉन्ड है। तो फॉर एग्जांपल हेक्सेन हैज 6 कार्बन and 4 hydrogen atoms with molecular formula C6 is 12. The condensed formula of hexane is and condensed formula of heptane is this one. So इसमें यहाँ पर without branching above or below it, यहाँ पर कोई ब्रांच वगैरह इसमें नहीं है, तो इसको हम कहेंगे ये कंडेंस फार्मूला है। इसके अलावा जो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, सो दिस इज यू कैन से a structure formula in which electrons are shown as dots and cross between various atoms in one molecule of a compound, and these are called dot and cross formula or electronic formula. तो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला क्या चीज़ है? तो इस स्ट्रक्चर फार्मूला जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स या क्रॉस फॉर्म में जो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम कहेंगे कि ये डॉट और ये क्रॉस फार्मूला है। और in this case the shear pair of electrons between two atoms represent a covalent bond. For example, in methane molecule the 4 electrons of the carbons are represented by dots, and cross is used to represent the electrons of 4 hydrogen atoms. So यहाँ पर जो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है इसमें हम जो कार्बन के मिसाल के तौर पर मीथेन की जो एग्जांपल है उसमें जो 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन्स के है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और क्रॉस जो ना उसको हम करते हैं जो हाइड्रोजन्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो क्रॉस है ये हाइड्रोजन्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो वी कैन से क्रॉस, और ये जो डॉट है ये के कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये डॉट फार्मूला है, हाइड्रोजन्स के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी कैन से दिस इज द dot and cross formula of methane. This is a dot and cross formula of propane. This is a propane because containing 3 carbon atoms. So these are hydrogen. You can say the dot and cross formula of propane. So these are given some formulas. You can say methane number of carbon atoms. You can say methane has 1 carbon atom and has formula CH4, or condensed formula CH4, and the structure formula which is represented by bonds of single bonds CH4. Similarly, ethane has 2 carbon atoms, a formula C2H6, and its formula, so this one is the structure formula. Similarly, propane has a formula C3H
8, and you can say this is the structure formula of propane. Similarly, butane has formula C4H10, it's the structure formula of butane. Pentane has a formula of this structural formula. Hexane has a formula, so this one, so a structural formula, and so on. So these are the formulas. This is the decane, so 10 carbon atoms. So now classification of organic compounds. Organic compounds are mainly classified into two types on the basis of carbon skeleton. Open chain are acyclic organic compounds, closed chain are cyclic organic compounds. So open chain are acyclic organic compounds. These are the organic compounds in which carbon atoms are in open chain skeleton structure. They can form long possible chains. Open chain organic compounds are further classified into straight chain organic compounds and branch chain organic compounds. So you can say the straight chain organic compounds, in these organic compounds, carbon atoms link with each other to form straight lines. So there is no branch in these organic compounds. For example, propane, so 3 carbon, CH3, CH2, CH3, so propane. CG butane has 4 carbons, CG pentane has 5 carbons. So the prefix N stands for normal and is used for straight chain organic compounds. So the second one is branch chain organic compounds. So as the name suggests, all the carbon atoms are not present in a linear sequence branch chains alkanes, so at least one carbon atom is linked with more than 2 other carbon atoms in the molecules. The common names have a prefix iso with the corresponding alkanes. For example, isobutane and isopentane. So isobutane, so you can say. तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये जो ब्रांच चेन है, ब्रांच चेन में नाम से जाहिर है कि इसमें जो कार्बन एटम्स हैं वो लीनियर यानी सीक्वेंस में मौजूद नहीं होते बल्कि ब्रांच चेन में पाए जाते हैं. तो इसमें एक कम से कम जो एक कार्बन होता है वो एक से ज़्यादा कार्बन के साथ लिंक होता है और उसको हम प्रीफिक्स आइसो से रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे कि ये ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये आइसोब्यूटेन है. सो these are 4 carbon atoms, 1, 2, 3, 4. It's a butane, but this can be represented by isobutane because this is a branch chain of organic compound. And similarly, this is a pentane, so 5 carbon atom, 1, 2, 3, 4, 5. But it is not straight chain, it is a branch also. A branch chains, we can say this is represented by isobutane. Organic compounds can be further classified into saturated organic compounds and unsaturated organic compounds. Saturated or unsaturated. तो saturated कौन से होंगे? Saturated organic compounds both in which one carbon atom in the compounds form 4 single covalent bonds with each other atoms. It's called saturated organic compounds. Example of saturated hydrocarbons are alkanes. यानी saturated organic compounds वो compounds होते हैं जिसमें हर कार्बन एटम जो है ना वो 4 सिंगल बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है जो बाकी एटम्स के साथ, तो उसको कहते हैं सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर अल्केन्स. अल्केन्स जिस तरह मीथेन है, उसमें इथेन है या प्रोपेन है, तो इसमें कार्बन एटम जो है 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं. सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड.
organic compounds in which at least one double bond, triple bond is present between carbon-carbon are called unsaturated organic compounds. It can be further divided into alkenes and alkynes. यानी वो compounds यानी unsaturated organic compounds वो compounds है जिसमें एटलीस्ट वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है कार्बन और कार्बन के दरमियान में, उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसको हम यानी इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू एल्कीन्स एंड alkynes। तो यानी जो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें सिंगल बॉन्ड की बजाय डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है in the form of alkene and alkynes. So alkenes कौन से hydrocarbons consist of at least one double covalent bond between two carbon atoms. alkenes में वो होते जिसमें at least one carbon atoms के दरमियान में at least one double bond होता है, जैसे ये कार्बन के दरमियान में at least one double bond है। तो alkynes कौन से alkynes वो होते हैं hydrocarbons with at least one triple bond between two carbon atoms, जिसमें कार्बन एटम्स के दरमियान में यानी ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसको हम कहते हैं अल्काइंस। So closed chain or cyclic organic compounds closed chains or cyclic organic compounds are those compounds in which carbon atoms are linked together to form closed chain structure ring। तो closed chain cyclic organic compounds होते हैं जिसमें वो कंपाउंड्स जिसमें जो कार्बन एटम है वो लिंक होता है लिंक्स होता है आपस में, तो ये क्रॉस चेन्स बनाते हैं, उसको हम कहेंगे कि ये क्लोज चेन और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और इसको हम मजीद टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, होमो साइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो होमोसाइक्लिक में क्या होता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स you can say organic compounds which are close chains ring structures are called homocyclic organic compounds. These organic compounds are further divided into alicyclic and aromatic organic compounds. तो alicyclic में कौन सा होता है, these are the organic compounds which are in close chain structure forming a ring. The ring is composed of only carbon atoms. तो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें रिंग की सूरत में कार्बन एटम्स आपस में दूसरे से जुड़े होते हैं। तो यानी these organic compounds resemble in properties to the open chain organic compounds but differ in their structure and formulas। ये ओपन चेन्स किसे के बराबर होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर और फार्मूला में ये डिफरेंट होते हैं। these organic compounds differ from open chains organic compounds by can say by H2। for example ये cyclopropane है, so 3 carbons, so cyclopropane this is closed ring, this is cyclobutane, so in closed ring, so you can say this is not open, it's closed। So next one is aromatic organic compounds। So these cyclic organic compounds having alternate single and double bonds in a structure carbon ring are known as aromatic organic compound। यानी aromatic organic compounds होते हैं जिसमें जिसकी जो है ना वो अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, उसकी जो स्ट्रक्चर उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होते हैं। मिसाल के तौर पर ये यहाँ पर
हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। तो ये अल्टरनेट जो यानी डबल एंड सिंगल बॉन्ड इसमें मौजूद है। तो यानी कि वन कार्बन वन, यहाँ पे टू कार्बन टू, दिस इज कार्बन टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर, दिस इज फाइव, दिस इज सिक्स. So in these six carbons of benzene, you can say that there are alternate single bond. This is a single bond, this is a double bond. This is a single bond, this is a double bond. This is a single bond, this is a double bond. So there are alternate single and double bonds. Similarly, the case of naphthalene having alternate double, single bond, double bond, single bond, double bond, and single bond. You can say double, single, double, and single. So this alternate. Similarly, in case of anthracene, is also alternate double bond, single, double, single, single, double, single, double, single, double. So this is alternate. The single, double, single, double. This is alternate single and double bonds. So these are called aromatic organic compounds. And we can say the heterocyclic organic compounds. So these are the organic compounds which contain one or more atoms other than carbon. यानी ये जो हेटेरोसाइक्लिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जो कंपाउंड्स हैं जिसमें एक से ज़्यादा एटम्स पाए जाते हैं। कार्बन के अलावा इसमें और भी एटम्स पाए जाते हैं, यानी सच सल्फर, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है रिंग में। यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें जो साइक्लिक जो इसका रिंग होता है उसके अंदर कार्बन के अलावा बाकी जो है एटम्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि सल्फर है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। तो इसको कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो एग्जांपल्स आर फ्लोरीन, थायोफेन एंड पायरिडीन। दिस आर द एग्जांपल्स। तो अब यहाँ पर ये कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है और नाइट्रोजन भी है। तो इसको हम कहते हैं ये क्या है, हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। Now here organic compounds are represented by open chain hydrocarbons, saturated hydrocarbons, unsaturated hydrocarbons, and unsaturated further classified into alkynes, alkenes. So similarly, organic compounds are also close chain cyclic hydrocarbons. These are homocyclic or heterocyclic. So homocyclic are further classified into alicyclic and aromatic. You can say that alicyclic are further classified into saturated and unsaturated, and saturated are cycloalkanes and cycloalkenes. You can say cycloalkynes. So they are unsaturated. So we can say that diversity and magnitude of organic compounds. So the diversity and magnitude of organic compounds is due to the uniqueness of carbon bonding and structure. Carbon unique bonding properties allows the formation of a variety of structures, including chains and rings of many shapes and sizes. Carbon can make bond with many other types of atoms such as hydrogen, oxygen, nitrogen. Yes, carbon, you can say, carbon is an element, but still its compounds are in millions due to the following reasons. तो ये बता रहे कि जो डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो
कार्बन की एटम की जो कार्बन बॉन्डिंग की जो यूनिकनेस है और उसकी स्ट्रक्चर है, तो उसकी वजह से जो कार्बन की ये जो यूनिक बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़ है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर को जन्म देता है, जिसमें से चेन स्ट्रक्चर शामिल है, रिंग स्ट्रक्चर शामिल है, और फिर मेनी शेप्स एंड साइजेस में। तो कार्बन जो है ना काफ़ी सारे एटम्स के साथ हो और भी काफ़ी सारे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यानी ये जिस तरह हाइड्रोजन है, यू कैन से हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये इनके साथ भी कार्बन बॉन्ड बना देता है। तो कार्बन एक एलिमेंट है, लेकिन इसकी जो कंपाउंड्स है वो मिलियंस में होते हैं। तो जो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स है कार्बन्स के, उसकी किस वजह से होते हैं? उसकी वजह ये है कि नंबर एक वजह है कि टेट्रावेलेंट। तो कार्बन इज टेट्रावेलेंट एटम। कार्बन ये टेट्रावेलेंट एटम है। कार्बन एटम कैन फॉर्म अ टोटल ऑफ 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। कार्बन यानी टोटल 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो यानी जिसकी वजह से इसकी यूनिकनेस है। तो मोड ऑफ बॉन्डिंग, द कार्बन एटम कैन फॉर्म single, double, and triple bond in their compounds. So you can say for single bonds, carbon can form single bonds. Carbon can form 2 single and 1 double bond in this case, and 2 double bonds in this case. Or you can say 1 triple bond and 1 single bond in this case. So this is different modes of bond formation of carbon. So you can say carbon can form different bonds, single bonds. You can say in one compound, you can say there's carbon, 2 types of bonds, double and single bonds, 2 single and 1 double in the same molecule. So you can say in the same molecule, 2 double bonds, you can say this is 1 triple bond and 1 double single bond. In case of this, you can say carbon has its unique properties of having a tetravalent bonding formation. So carbon bonding. Carbon atoms have the ability to covalently bond with each other carbon atoms to form straight chain or branch chains and rings. कार्बन की ये खसूसियत है कि वो मुख्तलिफ अदर कार्बन के साथ मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड्स बनाता है, जिसमें स्ट्रेट चेन्स बॉन्ड्स है, ब्रांच चेन्स है और रिंग्स फॉर्म है। तो ये हमारे पास हो ये सिंगल चेन है, ये दिस इज सिंगल चेन कैन से, एंड दिस वन इज ब्रांच्ड चेन, दिस इज ब्रांच चेन यू कैन से, and this is a closed chain ring. So this is the closed chain ring in this case. So you can say that carbon atoms have the ability to covalently bond with other carbon atoms to form. यानी कार्बन की ये खसूसियत है कि वो बाकी कार्बन एटम के साथ मिल के मुख्तलिफ बॉन्ड्स बनाता है, जिसमें स्ट्रक्चर चेन होता है, यानी मुख्तलिफ चेन्स बनाता है, जिसमें स्ट्रेट है मतलब और स्ट्रेच्ड है, ब्रांच्ड है और क्लोज्ड है। तो ये पहला यानी स्ट्रेट चेन है, दूसरा है ब्रांच चेन है और तीसरा है क्लोज चेन। तो ये कार्बन की खसूसियत है। इसके अलावा कार्बन बॉन्डिंग टू अदर एलिमेंट्स, कार्बन we can say carbon atoms have the ability differences. So we can say besides catenation, carbon atoms can bind easily with other elements like oxygen, nitrogen, and sulfur and halogens. तो इनके साथ भी बॉन्ड बना लेता है कार्बन नाइट्रोजन। इसके अलावा अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, द different bonding ability of the carbon also allow the different element of carbon atoms. This means that some organic compounds may contain the same number but have different properties because the atoms are arranged differently.
For example, the molecular formula C2H6O represent both ethanol and dimethyl ether. So this is the ether and this is the alcohol. So जो बता रहे हैं कि जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है डिफरेंट कार्बन की ये खासियत है कि वो डिफरेंट बॉन्ड्स बनाता है तो उसकी जो ये खसूसियत है ये फिर क्या करता है ये जो है मतलब अलाउ करता है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स यानी कार्बन एटम्स को मुख्तलिफ तरीकों से इनको अरेंज करता है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सेम नंबर ऑफ एटम्स पे मुश्तमिल होते हैं बट उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना मुख्तलिफ होती है यानी नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं लेकिन प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होती है। उसकी वजह ये कि उनके जो एटम्स होते हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से अरेंज होते हैं। यानी एक कंपाउंड है दो कंपाउंड्स है अगर उसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स है सेम टाइप्स ऑफ एटम्स हैं लेकिन उसकी जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है जिसकी वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी मुख्तलिफ हो जाती है। मिसाल के तौर पर ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जिस तरह ये बताया गया एक C2H6O सो कैन से C2H6O ये C2H6O तो इस सूरत में यहाँ पर सेम फार्मूला है ये ईथर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये सेम फार्मूला है तो ये यहाँ पर अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें भी 3 कार्बन हैं इसमें भी 3 कार्बन हैं इसमें भी 3 कार्बन हैं तो यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन यहाँ पर है और यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन है तो बाकी नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है यहाँ पर भी 3 5 6 और यहाँ पर भी 6 तो ये जो कंपाउंड है इसमें नंबर ऑफ एटम सेम है कि उनकी अरेंजमेंट मुख्तलिफ है तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये जो है कंपाउंड है इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी मुख्तलिफ है ड्यू टू दी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो इसके अलावा you can say strength of covalent bonds of carbon atoms. The size of the carbon atom is very small due to which the carbon atoms form strong covalent bonds. जो कार्बन एटम की जो साइज है वो बहुत छोटा होता है जिसकी वजह से कार्बन जो है ना स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है यानी एटम जो होते हैं आपस में यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड्स मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं और इसके अलावा बाकी एलिमेंट्स के साथ भी ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं और बाकी एलिमेंट्स कौन कौन से जैसे हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है सल्फर है हैलोजन है। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम इसकी ये जो खसूसियत है ये यानी इस खसूसियत की वजह से कार्बन जो एटम है वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को बनाता है। सो यू कैन से ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज कार्बन कैन फॉर्म नंबर ऑफ कंपाउंड्स। नाउ you can say that general characteristics of organic compounds. So these are general characteristics of organic compounds. So organic compounds, we can say organic compounds have many common characteristics due to their molecular structure. Some of the important characteristics are given below. यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है वो करेक्टरिस्टिक्स कॉमन होती है ड्यू टू मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और सम इम्पॉर्टेंट गिवन बिलो। नंबर 1 फर्स्ट वन है कंपोजिशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं यानी उसकी कंपोजिशन क्या है वो कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑक्सीजन पे भी नाइट्रोजन सल्फर और फास्फोरस एंड हैलोजेंस पे भी मुश्तमिल होते हैं अलॉन्ग विद कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। तो ये उनकी कंपोजिशन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं कार्बन मेनली कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो इसके अलावा इसमें जो है ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर फास्फोरस और हैलोजन वगैरह भी होते हैं। तो इनकी ये कंपोजिशन है। इसके अलावा कोवेलेंट नेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स
तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं ये कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं, यानी इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। दे आर मेनली नॉन पोलर, जो कि नॉन पोलर होता है न, और यानी कुछ के अलावा यानी मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट होता है, यानी और वो नॉन पोलर होता है सिवाय चंद के, और दे डोंट आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशंस, ये एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज नहीं होता। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी, अगर हम सॉल्युबिलिटी को देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली नॉन पोलर इन नेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली जो नॉन पोलर होते हैं, so they are soluble in non-polar solvents like ether, benzene and carbon tetrachlorides. So organic compounds मोस्टली जो है ना ये नॉन पोलर होते हैं, तो क्या होते हैं मोस्टली दे आर नॉन पोलर होते हैं। तो इसके अलावा यानी चूंकि ये नॉन पोलर होते हैं तो लिहाजा इस नॉन पोलरिटी की वजह से ये नॉन पोलर में सॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से हैं, जैसे ईथर है, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो ये जो है ना ये नॉन पोलर जो सॉल्वेंट्स हैं इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा मोस्ट दिस कंपाउंड्स आर वी कैन से मोस्ट ऑफ दिस कंपाउंड्स are less are insoluble in water which is polar। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है पानी में insoluble होती है क्योंकि क्योंकि पानी जो है ना ये क्या है, पानी जो है वाटर क्या है, ये पोलर है। वाटर क्या है, पोलर। तो ये वाटर पोलर है, तो इस वाटर में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये क्या होते हैं, insoluble होते हैं, insoluble होते हैं। तो इसके अलावा लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वो भी कम होती है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के जरिए से आपस में जुड़े होते हैं। सो यू कैन से दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हील्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। So due to these reasons, we can say organic compounds have generally low melting and boiling points। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होती है। उसकी वजह यह है कि उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो बहुत वीक होते हैं उसके दरमियान में, जिसकी वजह से इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाती है। सो दे कैन इजीली बी ब्रोकन डाउन, इसको हम इजीली तोड़ सकते हैं, और ये मोस्टली वोलेटाइल होते हैं यानी जल्दी ऑपरेट हो जाते हैं। तो therefore their melting points are low। जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो लो होते हैं, क्योंकि अगर हम पेट्रोल को किसी उसमें रखें ना ओपन कंटेनर में रखें तो वो जल्दी एवापोरेट होकर ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इथेनॉल को रखें या कोई एसीटोन को रखें तो वो जल्दी एवापोरेट होकर निकल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वीक है, और उसकी वजह है कि उनके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो वीक होती है। So we can say that next one is thermal instability. Organic compounds are usually you can say thermally unstable। यानी organic compounds mostly thermally unstable होते हैं, यानी कि अगर हम उनको कोई गर्म करे, हीट अप करे तो वो ब्रेक हो जाते हैं। तो they decompose into smaller molecules on heating। अगर हम इनको गर्म करें तो ये जल्दी स्मॉलर मॉलिक्यूल में डिकम्पोज यानी टूट जाते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी इज ऑफ ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस। तो ये जो खसूसियत है कि यानी जो लो यानी थर्मली अनस्टेबिलिटी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की है, इसका कमर्शियल लेवल पे बड़ा इसका अहम यानी फ़ायदा होता है, बड़ा फ़ायदा होता है इसका। उसकी जैसे कि हम क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम यानी पेट्रोल की जो रिफाइनिंग होती है तो उसमें ये जो लो थर्मल स्टेबिलिटी है ये इसका बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि पेट्रोल की रिफाइनिंग में जब हम क्रूड ऑयल को
से पेट्रोल को आगे यानी पेट्रोल डीजल वगैरह को बना रहे होते हैं। तो चूंकि इसकी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है तो ये जल्दी यानी थर्मल इंस्टेबल होती है, तो लिहाजा उसमें इनका बड़ा अहम रोल होता है ये थर्मल इंस्टेबिलिटी का। तो इसके अलावा इनफ्लेमेबिलिटी इनफ्लेमेबिलिटी सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फ्लेमेबल, ये आग पकड़ते फ्लेमेबल है, दे बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। अगर इसको हम हवा में की मौजूदगी में ये आग पकड़ती है और ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट होते हैं, और इसके अलावा हीट भी जनरेट होती है साथ साथ। तो दैट्स वाई फ्यूल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो जिसकी वजह से फ्यूल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फ्यूल कौन से, वुड है, जैसे कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। एंड देयर कंबशन प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इसकी जो कंबशन है वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा reactivity reactions involving organic compounds are much slower than reactions which involve inorganic compounds. So that's why organic compounds require heating through mixing and use of proper catalyst to speed up the reaction. So किसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो रिएक्शंस हैं वो बहुत स्लो होता है, यानी उन रिएक्शंस के मुकाबले में जिसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बना होती है। यानी आप यूज़ कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो रिएक्शन है वो स्लो होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के मुकाबले में। तो जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ही जो रिक्वायर्ड होती है, यानी थ्रू मिक्सिंग एंड द यूज ऑफ प्रॉपर कैटलिस्ट टू स्पीड अप द रिएक्शंस। यानी हम जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब हीटअप करते हैं तो उनके लिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं ताकि ये जो रिएक्शन है उनको हम तेज कर सके, स्पीड अप कर सके। तो यानी इसकी ये खसूसियत है। इसके अलावा बर्निंग विद स्मोकी फ्लेम, burning with smoky flame can say when higher molecules organic compounds burns, they produce smoky soot flame due to incomplete combustion. तो जो हायर मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये जलते बर्न हो जाते हैं, और ये मतलब धुआं स्मोकी टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। ये जो स्मोकी फ्लेम होता है ये इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से होता है। आइसोमेरिज्म, so organic compounds show isomerism. Isomerism is the phenomena in which two or more compounds have the same molecular formula but different structure formula. तो आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो करता है। आइसोमेरिज्म क्या है? ये वो अमल है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स हों जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, तो फार्मूला ना स्ट्रक्चर फार्मूला, यानी आइसोमेरिज्म शो करता है क्योंकि अगर दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास है तो उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो तो सेम होगा लेकिन उसका स्ट्रक्चर फार्मूला वो मुख्तलिफ होगा। तो लिहाजा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये आइसोमेरिज्म को भी शो करता है। तो इसके अलावा नॉन यानी करेक्टर, दे डोंट फर्निश आयंस, you can say they show molecular reactions. Organic compounds have covalent bond between carbon hydrogens. The electronegativity difference is very small, so they are non-polar in nature and show non-ionic character. This you can say electrical conductivity, you can say similarity in behavior. So different organic compounds show close relationship with each other due to the presence of some same functional groups. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो यानी बाज़ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं तो उनमें फंक्शनल ग्रुप क्योंकि सेम होता है तो ये आपस में क्लोज रिलेशन का शो होता है, क्लोज इनका ताल्लुक होता है आपस में। तो इसके अलावा इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी, they are poor conductor of electricity.
इलेक्ट्रिकल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी उसमें बिजली पास नहीं होती, करंट पास नहीं होता। बोथ इन फ्यूज स्टेट इन सोल्यूशन फॉर्म, यानी इस फ्यूज स्टेट सोल्यूशन फॉर्म दोनों फॉर्म इनमें से करंट पास नहीं होता। उसकी वजह है कि डिजोबिजेशन नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से इनमें से करंट पास नहीं होता। So we can say the next one is the sources of organic compounds, but we will study this in next video. You can say in next video we will discuss it. So thanks for watching.